Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are good, safe, and healthy. So, dear students, I am Munish Yadav, PGT Economics from Surah School, Bhiwadi. So, again, we are here to discuss about Chapter 5, Theory of Demand. So, dear student, before starting this chapter and before starting today's topic, I want to uh, explain something that this chapter is really important, dear students, and on the basis of fifth chapter we can complete our chapter number 6. Okay, so just try to understand each and every point, and if you are facing any doubt, my dear students, so you can call me and send message regarding your doubts. Okay, so don't hesitate to send your doubts. Yes, dear students, so let's proceed for today's topic. Yes, we have started our chapter number 5, that is theory of demand. Or in this chapter, we will recap some points that we have discussed in the earlier videos. We have already complete about the demand schedule, quantity demanded, demand curve, then determinants of demand. Then after law of demand, we have completed assumptions law of demand, then exception to the law of demand we have completed. And in the previous video, last video, we have completed movements along a demand curve and shift in demand curve. So my dear students, we have discussed that movement always be because of change in own price of the commodity. It is a moving up and down of the demand कर्व का अप और डाउन जाना ही मूवमेंट होता है. इसमें डिमांड कर्व चेंज नहीं होता और इट इज़ बिकॉज ऑफ ओनली चेंज इन ओन प्राइस. ये सिर्फ ओन प्राइस की वजह से होता है. बट ऑन द अदर हैंड शिफ्ट इन डिमांड इज रिस्पॉन्सिबल टू शिफ्ट इन डिमांड कर्व. ये डिमांड कर्व को भी चेंज करती है, मे बी ईदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड. या तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा या बैकवर्ड. फॉरवर्ड मीन्स इंक्रीज और बैकवर्ड मीन्स डिक्रीज इन डिमांड. ओके, सो हेयर own price of the commodity will be remain constant and other things will change. Okay, so diagrammatic form we have completed. Yes, dear students, so today a very important question we are going to discuss, that what are the difference between extension of demand and increase in demand. Okay, so let's proceed for the topic. Yes, dear students, here is the topic: extension of demand. This is caused only by change in own price of the commodity. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बात क्लियर कर लेनी है, एक्सटेंशन इज़ अ पार्ट ऑफ मूवमेंट. एक्सटेंशन किसका पार्ट है? मूवमेंट का पार्ट है. ओके, और इंक्रीज इन डिमांड किसका पार्ट है बेटा? शिफ्ट. क्लियर? सो दिस इज कॉज्ड ओनली बाय चेंज इन ओन प्राइस. ये ओन प्राइस की वजह से होता है. एंड दिस इज चेंज इन अदर डिटर्मिनेंट्स. ये अदर डिटर्मिनेंट्स की वजह से होता है. इसमें ओन प्राइस कॉन्स्टेंट होते हैं. डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटीज़ ओनली रिस्पॉन्सिबल. जब ओन प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड एक्सटेंड हो जाती है, और इसमें सेवरल कॉजेज हो सकते हैं: इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस. एनी ऑफ द पॉइंट कैन बी रिस्पॉन्सिबल. डायग्रामेटिकली आप शो कर सकते हो. इट विल बी द डाउनवर्ड स्लोप, लेफ़्ट टू राइट. ये लेफ़्ट टू राइट होगा और इसमें आपकी फॉरवर्ड शिफ्ट होगा. ओके, सो नेक्स्ट इज yes, contraction of demand and decrease in demand, just opposite to extension and increase in demand. Very easy. Contraction of demand, this is caused by change in own price. ये own price की वजह से होता है. This is caused by change in other determinants. own price constant होगा. ओके okay? ये own price की वजह से होता है, ये other factors की वजह से होता है. own price increase होगा तो demand contract हो जाएगी, और इसमें there are the several causes: decrease in the income of consumer, decrease in the substitute price goods, and increase in the price of complementary goods, and taste unfavorable taste and preference are the responsible factor for decrease in demand. Diagrammatically upward होगा, right to left. okay, और ये backward shift होगा. सो डियर स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ टू डिफरेंसेस, इन दोनों डिफरेंस के बेस पर, टू डिफरेंसेस मीन्स एक्सटेंशन and increase, second contraction and decrease, you can differentiate your topic, that is what is the difference between movement along a demand curve and shift in demand curve. Okay, so have a look for the difference. You can create difference here. Change in, it is known as change in quantity demanded, and it is known as change in
demand. Okay, first difference is clear. Second, it has two parts, extension and contraction. It has two parts, increase in demand and decrease in demand. Okay, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, इट इज़ बिकॉज ऑफ चेंज इन ओन प्राइस, ये सिर्फ ओन प्राइस की वजह से होता है, और इट इज़ कॉज बाय द चेंज इन अदर फैक्टर्स, ये अदर फैक्टर्स की वजह से होता है. नो चेंज इन डिमांड कर्व, इसमें डिमांड कर्व चेंज नहीं होता है. ओके, और हेयर डिमांड कर्व शिफ्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड, इसमें डिमांड कर्व चेंज हो जाता है. Okay, so dear students, you can easily differentiate between movements along a demand curve and shift in demand curve. Yes, so today's next point is, yes, cross price effect. So what is cross price effect, my dear students? Cross price effect means when the price of one commodity affects the demand of other. एक का प्राइस चेंज होने से अगर दूसरी कॉमोडिटी के प्राइस में चेंज हो रहा है, दिस इज क्रॉस प्राइस इफेक्ट्स. ओके, और वी विल स्टडी द क्रॉस प्राइस इफेक्ट इन रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री, दो गुड्स में हम पढ़ेंगे. Clear? The meaning is clear? Yes, when the price of one commodity affects the demand of other commodity is known as cross price effect. So there are the two types of goods we have studies, substitute goods and complementary. So what do you mean by the substitute goods? Substitute goods means which can be used in place of each other, जो एक दूसरे की जगह यूज हो सकते हैं. तो here we will take the example of टी एंड कॉफ़ी. हम टी एंड कॉफ़ी को लेकर चलेंगे. टी हमारा मेन गुड में रहेगा, उसकी हमें डिमांड देखनी है, कॉफ़ी के प्राइजेस देखेंगे. ओके, सो सबसे पहले हम बात करें इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. हम बात कर रहे हैं कि कॉफ़ी के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं. सो अगर कॉफ़ी के प्राइस इंक्रीज होंगे तो क्या लोग कॉफ़ी पियेंगे? ज़्यादा नहीं पियेंगे, वो क्या पियेंगे? टी पियेंगे. सो देखो डियर स्टूडेंट्स, डायग्रामेटिकली आप कैसे शो करोगे बेटा? इट इज़ वेरी इजी. अगर आपको एक ही बार में समझ में आता है तो इट विल बी रियली हेल्पफुल. येस, y axis और x axis. X axis पर show the quantity, on the y axis show the price. Okay, we are showing the demand for tea only. हमने मान लिया है कि कॉफ़ी के प्राइस बढ़े हैं, बट हमें डिमांड किसकी शो करनी है? हमें डिमांड टी की शो करनी है. ओके, here is the point. Yes, quantity and price. So price is, टी के प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है. दिस इज गिवन डिमांड. ओके, सपोज 10 यूनिट्स डिमांड हो रही थी. अब कॉफ़ी के प्राइस बढ़ने से लोग टी ज़्यादा पी रहे हैं. जो लोग कॉफ़ी पी रहे थे अब वो कॉफ़ी को छोड़कर टी पीने लगे हैं, तो टी की डिमांड सेम प्राइस पर क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी, फॉरवर्ड शिफ्ट. ओके, डी से D1 पे शिफ्ट हो जाएगी. तो इट मीन्स दिस इज द प्राइस किसका चेंज हुआ? कॉफ़ी का. डिमांड किसकी चेंज हो गई? टी की, फॉरवर्ड शिफ्ट. ऑन द अदर हैंड, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. अगर कॉफ़ी के प्राइस कम हो जाते हैं, तो कॉफ़ी के प्राइस कम होंगे तो बहुत सारे लोग जो टी पी रहे थे अब वो कॉफ़ी पीना शुरू कर देंगे. येस, सो टी की डिमांड सेम प्राइस पर क्या होगी? कम हो जाएगी. गिव टी के प्राइस में चेंज नहीं करना, उसकी हमें सिर्फ डिमांड चेंज करनी है. ओके, सो नाउ सपोज दिस इज द गिवन डिमांड फॉर टी. ये ऑलरेडी गिवन डिमांड थी. व्हेन देयर इज नो चेंज इन प्राइस, नाउ सडनली द प्राइस ऑफ कॉफ़ी डिक्रीजेज. कॉफ़ी के प्राइस कम हो गए, सो लोग कॉफ़ी पीना शुरू करेंगे, टी की डिमांड कम करेंगे, तो डिमांड कर्व विल शिफ्ट बैकवर्ड. अब ये कौन सी साइड शिफ्ट हो गया? बैकवर्ड. क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. सेकेंड पार्ट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज टुगेदर, जो एक साथ ही यूज हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल. तो कार हमारी मेन गुड में रहेगी, इसकी हम डिमांड चेक करेंगे, और पेट्रोल के हम प्राइस चेक करेंगे. ओके, सो पहले लेते हैं इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. ये मानकर चल रहे हैं कि भाई पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज हो गए, कार के प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा. यस डियर, कार की सिर्फ हमें डिमांड दिखानी है. तो एज पर द डायग्राम वी विल शो हेयर. यस, on the x-axis quantity, on the y-axis price, और कार के प्राइस कांस्टेंट है. दिस इज द गिवन डिमांड, दिस इज द गिवन डिमांड फॉर कार. यस सर, D1. अब हमने तो पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज हो गए, तो डिमांड फॉर द पेट्रोल वर्जन कार्स विल डिक्रीज. अब पेट्रोल वर्जन कार डी की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी कार्स की. सो बैकवर्ड शिफ्ट. ओके, क्लियर? जैसे ही पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज हुए, कार की डिमांड कम हो गई. और हेयर सेकेंड केस इज डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस अगर कम हो जाए, मीन्स पेट्रोल के प्राइस अगर कम हो जाए, तो पेट्रोल के प्राइस कम होंगे तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी. ये सिंपल. एक्स एक्सिस पर आपको क्वांटिटी शो करनी, ऑन द वाई एक्सिस शो द प्राइस, एंड प्राइस फॉर कार्स कांस्टेंट. दिस इज द गिवन डिमांड फॉर कार. व्हेन द प्राइस डिक्रीजेज फॉर पेट्रोल, अब कार की डिमांड बढ़ जाएगी, लोग गाड़ियाँ खरीदना शुरू कर दें, क्योंकि पेट्रोल पहले के कंपैरिजन में सस्ता हो गया. Fuel. Yes beta, so today we have discussed very important point. What we have discussed? We have discussed two things. One is, what is the difference between
extension of demand, increase in demand. Second, contraction of demand and decrease in demand. And same way you can differentiate between difference in movements along a demand curve and shift in demand curve. Okay, then after we have completed cross price effect, that how price of one commodity affect the demand of others. So in this category we have two types of goods: substitute goods and complementary goods. So successfully we have completed with diagram. So I hope you understand the points. Okay dear students, so do all the diagrams in your fair notebook. Clear? Tomorrow we will complete this chapter along with two topics. So dear students, stay blessed, stay safe at home.